Immune response of adaptive immunity. Immune response of adaptive immunity. There are two arms of adaptive immunity which have different mediators and effectors and different purposes and one common aim. So there are two adaptive immunity. Two arms है adaptive immunity का and which have different mediators. इसके पास different mediators हैं and effectors and different purpose. वन बट वन कॉमन एम है कि एलिमिनेट करता है क्या एंटीजन. जितने भी मेडिएटर्स है वेक्टर्स है सब क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं एंटीजन को. दीज टू आर्म्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर and collaborate to achieve the final goal of eliminating the antigen. Of these two arms of the adaptive immune response, one is mediated mainly by B cells and circulating antibodies, and a form of immunity which is referred to as a humoral immunity. The word humor was formerly used to define body fluid. Humor matlab body fluid. The other mediated by T cell, which do not synthesize antibodies but instead synthesizes and release various cytokines that affect other cells and also directly kill target cell. Hence, this arm of acquired immune response is termed cellular or cell-mediated immunity. And the other is mediated by T cell, which do not synthesize antibody but instead synthesize the release various cytokines that affect the other cells, also directly kill target cells. Hence, this arm of the acquired immune response is termed cellular and cell-mediated immunity. In humoral immunity, B lymphocyte synthesize and secrete antibody with specificity against the foreign substance, where the T cell, T lymphocyte do not make antibody but perform various effector functions when antigen presenting cell bring antigen into the secondary lymphoid organ. APC bring antigen into the secondary lymphoid organ. T cell also interact with B cell and help the latter make antibodies and make a central role in the development and regulation of adaptive immunity. Innate and adaptive immunity are not independent. अलग अलग काम नहीं करते. The innate and adaptive immunity operate in cooperative and interdependent way. The activation of innate immune response produce signal that stimulate and direct subsequent adaptive immune response. They cooperate in many ways. The encounter between macrophage and microbe can generate danger signal that stimulate and direct adaptive responses. It may increase the ability of macrophage to display antigen for recognition. तो यहाँ पे इंक्रीज करता है एबिलिटी ऑफ मैक्रोफेज कि डिस्प्ले करे एंटीजन को अपने ऊपर फॉर रिकॉग्निशन बाय एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स. जैसे टी सेल्स उस पर उसको रिकॉग्नाइज कर ले. तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होता है वो अपने ऊपर रिकॉग्निशन अपने ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करता है कि जिससे टी सेल क्या करे उसको रिकॉग्नाइज कर ले. टी सेल क्या करे रिकॉग्नाइज कर ले. The macrophage stimulated by encounter with microbes also secrete immunoregulatory molecule called cytokine. एक तो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है ऊपर से साइटोकाइन भी सिक्रीट कर रहा है. दिस साइटोकाइन गाइड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. ये साइटोकाइन गाइड करता है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को. वाइस वर्सा adaptive immune system also produce signal and
component which stimulate and increase the efficacy of innate response. जो adaptive immune system है वो सिग्नल भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड कंपोनेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है जो स्टिमुलेट कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है एफिकेसी ऑफ इनेट रिस्पॉन्स को. द सेल ऑफ अडेप्टिव सिस्टम T cells secrete cytokine and increase the ability of macrophage to kill the ingested microbes by binding to the pathogen. तो फिर जो सेल ऑफ अडेप्टिव सेल्स है टी सेल क्या कर रहा है वो भी टी सेल्स भी सिक्रेट कर रहा है साइटोकाइंस. इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ मैक्रोफेज जो मैक्रोफेज की एबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है किल करने में माइक्रोब्स को बाय बाइंडिंग द पैथोजन. एंटीबॉडी मार्क इट एज अ टारगेट फॉर अटैक बाय कॉम्प्लीमेंट.